I am Manoj Kumar Vera, Subject Expert Mechanics from MKD Education. I do welcome you to my class. In my class previously we have discussed many more things about friction, chapter 3 of your mechanics. We have discussed concept, advantages, disadvantages, different equilibrium conditions in horizontal plane, in inclined plane. Then in my previous class we have discussed ladder friction and equilibrium of ladder considering friction. Today we will discuss a new more aspect of friction, that is wedge friction. So prior to going to wedge friction, I wish and I expect you all to come and browse our website www.mkdeducation.com. From here you can download your class notes, you can see our video classes, you can give your feedback to develop ourselves, you can suggest us how to make our endeavor more advantages for you. So for now, let's come and see what we will discuss today. So dear students, today our topic is wedge friction. So first of all we should know what is an wedge. A wedge is what? So wedge is a structure, wedge is a physical structure or a physical body, just like a triangular object or a trapezoidal object which is used for lifting heavy loads. किछि लोड को आमे उठेया पई आमे कोन करछु गोटे वेज दरकार पडुची. आमे तो जानिछु इवन सम वर्क इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, स्टिल by applying friction theory in wedges we can lift heavy loads. आमे गोटे प्रॉब्लम करी सॉल्व करिवु. So this is all about our introduction. This says what is a wedge and how it performs work considering friction. So this is all about introduction of our wedge friction. This is all about the concept of a wedge. Let's move to our next slide, that is outcome of this class. At the completion of the class, a student will able to know the amount of force required to lift a load and also amount of load can be lifted by the effort P by means of an wedge. Wedge को हमें यूज करिकी केमती मिनिमम एफर्ट देकी हेवी लोड को हमें लिफ्ट कर परिबो ताई विषय रे हमें ई टोटल क्लास रे हमें डिस्कस करिबो बाय टेकिंग ए हेल्प ऑफ एन एग्जांपल और टेकिंग हेल्प ऑफ ए प्रॉब्लम. So this is a pictorial view of a wedge. Generally हमें देखिबो ए भले wedge टा में बड़ बड़ जेता लोड हेवी बल्की लोड टा टेकी बार थिबो हमें ए भली वेज टा को ता तळे देकी पछरु ए जो रेक्टेंगुलर साइड रु हमें फोर्स दो एफर्ट देले द एडवांसमेंट ऑफ दिस वेज विल रेज द लोड ग्रेजुअली. मु गोटे फिगर बनेबी, फिगर हमें डिस्कस करिवो. सो देन कमिंग टू a practical example, here a block weighing 1500 Newton overlying a 10-degree wedge on a horizontal floor and leaning against a vertical wall is to be raised by applying a horizontal force to the wedge. That means 1500 Newton of weight of a body is to be lifted upwards where taking the help of an wedge. Assuming the coefficient of friction between all surfaces in contact to be 0.3, determine the minimum horizontal force required to raise the block. Our objective is, our aim is to find out the horizontal force which will give to the wedge. हमें से wedge को कितने horizontal force देले से wedge टा ultimately load टा को ऊपर टेकी की नबो. से problem टा हमें फिगर बने के हमें discuss करें. Okay, let's move to the board. See, this is a rough horizontal plane over which rough I am hatching the rough plane. This indicates this plane is rough.
This is a wedge and this is placed over a rough horizontal plane. कौन होची? This is also touches a vertical constrained vertical wall over which this is the load to be lifted. This is the block. ए ब्लॉक टा को ऊपर को उठेबार अछि. केमिति उठेबु? ब्लॉक रो वेट टा देछि. डाटा गिवन. Weight of the block is given 1500 Newton. Here this is given 1500. 1500 Newton is given, and this load of this heavy block will be or is need to be lifted upwards when here जेतबे हमें एठी किछि एफर्ट पी दबु. Gradually this picture says when we will apply horizontal force P here, this wedge will move towards left. Thus by creating friction at this place and at this place, this block will move upwards. हमर ऑब्जेक्टिव कोन थिला? ए ब्लॉक टा को ऊपर को उठेबार ना. Obviously picture हमके एति कि हमें रियलाइज करि परछु जेतबे हमें एपोर्टरू किछि horizontal force दबु एटा एमति ग्रेजुअली एडवांस हबो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. जेहेतु ए जो वॉल टा हमर कंस्ट्रेंट अछि, फिक्स्ड अछि, जनरली कोन हबो? This block will raise upward, creating friction at this surface and at this surface. Now see how we will analyze the total picture. Picture को हमें केमिति analyze करिवु in terms of resolution of forces and reactions. एठी कोन force और reactions पड़िबो. एठी weight of the block, this is block and this is wedge. वेज को हमें फोर्स दबु, अल्टीमेटली ब्लॉक टा ऊपर को उठिबो. एठी कोन होछि केमिति हमर फोर्सेस एंड रिएक्शंस फ्रिक्शंस नै कि ए ब्लॉक टा ऊपर को उठिছে हम रियलाइज करबा. नाउ सी द वेट ऑफ द ब्लॉक कंसंट्रेटेड हियर एट द सीजी. जेते बेले हमें ए बोल्ट को ब्लॉक टा को हमें कंसीडर करबो. दिस ब्लॉक इज हैविंग ए टेंडेंसी टू मूव this side and this side because a तळटा और ए लेफ्ट साइड वॉल और ए ग्राउंड हॉरिजॉन्टल is constrained fixed. तो तार मूवमेंट र चांस नहीं. तो ये ब्लॉक मूवमेंट करिवो टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन एंड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. जेते बेले से ए डायरेक्शन को मूव करिवो फ्रिक्शन डेफिनेटली केमिति होबो? टुवर्ड्स लेफ्ट पडिवो. एटी फ्रिक्शन कोण टुवर्ड्स लेफ्ट पडिवो. जेते बेले बॉडी टा ऊपर को जीवो friction कोड पडिबो towards downward पडिबो. This is F, this is also F. Now see what will happen. Since this block is leaned against the vertical wall, ए ब्लॉक टा कोन अछि vertical wall को lean हेक अछि डेरिक अछि, therefore a reaction will be there, that is normal reaction Rn. This is all about considering the force and reaction of the block. Now come to wedge. Wedge रे कोन होची? Effort is applied horizontally. Similarly, a reaction, vertical reaction will be there, that is Rn to this wedge. Wedge को definitely हबो. Wedge टा कोड को move. See, so this block is encountered with normal reaction, frictional force and its weight, own weight. Now come to the wedge. The wedge is experiencing a horizontal force P, manual force, and a normal reaction from the ground Rn say, and similar kind of a frictional force here. See, now I am taking this block to another portion here. See, this is the block, this is the wall,
This is the block. This is weight. Now see, this block is subjected to, or this block is having tendency to move this direction. So friction will definitely happen towards the downward direction and towards the left. Say F. Clear? Now this is the horizontal normal reaction and this is the frictional force F. Say. Thing is, we have Rn frictional force, W that means weight of the block, and here frictional force at the conjunction of the wedge, the block and the wedge. See what will happen. This frictional force and normal reaction will be having a resultant reaction. Say that is R. Because we know according to parallelogram law of forces, the diagonal of the two forces F force and Rn force will be having the resultant of these two forces. So these R will be having alpha angle. That angle is angle of friction. ये जो एठी उटे एंगल ऑफ फ्रिक्शन हे गला कोन हे गला एटा आर आसिला रिजल्टेंट बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स आर इज मेकिंग अल्फा डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन सी नाउ वी विल कंसीडर आर डब्ल्यू एंड एफ तो ये तीनटा को नेकी हमें एठी गोटे कोन फ्री बॉडी डायग्राम बनिबो सी आर free body diagram of the wedge. See, these are resultant reaction can be drawn here and making alpha degree to the horizontal. Weight is vertically downward. That is weight. And see what will happen here. This block is resting on the wedge. A wedge, a block ta wedge upar achi. So wedge will give a reaction. Wedge will give a normal reaction here to the block. A wedge ta a block को गोटे normal reaction दबो. देखो कौन होची ये ब्लॉक टा वेज टा ब्लॉक को गोटे normal reaction देला. Again कौन होची frictional force भी act करची towards this direction. तो एठी भी कौन हबो गोटे resultant reaction गोटे एठी act करिवो जेमिति एठी जेमिति resultant reaction गोटे act कला normal reaction आ friction को बेस करके गोटे resultant reaction जेमिति act कला एठी भी सेमिति this is F, this is F, this is normal reaction and this is the resultant reaction between F and Rn. See, तो सेटे भी हमें एठी ड्रॉ करिवो केमिति ड्रॉ करिवो सी if this angle is say theta क्वेश्चन रे हमको देइछ this angle theta is given 10 degree wedge 10 degree wedge ए जो wedge टा रो एंगल टा होची theta that is 10 degree see so this is 10 degree means this is also theta or 10 degree and this angle is alpha. So total this angle is theta plus alpha. This angle is theta plus alpha. So here this angle is theta plus alpha. So this angle is theta plus alpha. This is taken to be R. If this is R1 and this will be R2. हमें नेमिंग टा आमो कन्वीनियंट वे आमो इजी
एक्सेप्टेंस पई हमें R1 R2 नै परू नहले RW R ब्लॉक नै परू नहले R वेज नै परू तो मु एठी कोन नेली एटा नेली R1 एटा नै गेली R2 सी हियर फ्रॉम दिस फिगर हमें कोन कलु जस्ट ब्लॉक को जतले कंसीडर करलु केवल ए ब्लॉक को कंसीडर करिकि हमें बाहर कलु कोन जे W R1 and R2 बाहर कर देलु if this is the very important aspect of judging the forces and reaction of the block ए ब्लॉक रो एटा को हमें सबले माइंड रखियो पड़िबो जे केमिति R2 R1 आ W रो तार पोजीशन केमिति हेगला दिस इज ऑल अबाउट कंसीडरिंग द ब्लॉक ओके मु एबे लिभे दोची एबे हमें कंसीडर करिवु काहा को वेज को कंसीडर करिवु हमें कांसेप्ट बुझी गला परे प्रॉब्लम ता खाली जस्ट हमें फार्मूला रे पकेबो आंसर हे जिवो तो कोन हबो नाउ सी विल नाउ कंसीडर द वेज forces and reaction experienced by the wedge okay let me draw the wedge here this is the wedge this is the horizontal rough surface now see force is being applied horizontally say P this is the CG of the wedge this is the normal reaction Rn clear जत्ते बळे हमें वेज टाकू फोर्स दबो वेज विल मूव टुवर्ड्स वेज विल एडवांस टुवर्ड्स द लेफ्ट हला माने फ्रिक्शन को वर्ड कहबो फ्रिक्शन हो टुवर्ड्स राइट इट हला फ्रिक्शन clear now see here F and Rn will be having a normal reaction will be having a normal reaction say this is R3 and this will be having angle that angle of friction alpha सब बेले मु कहि छी angle of friction is the angle between normal reaction and resultant of frictional force and normal reaction so this is alpha now see जते बेले बॉडी टा को हमें लेफ्ट को एडवांस करू छु तले कोन हो फ्रिक्शन विल एक्ट towards this direction upward clear okay see same R2 which react the ए जो रिएक्शन टा वेज दोथिला ब्लॉक को सेम रिएक्शन ब्लॉक दबो वेज को that is R2 is common R2 is the common reaction between block and wedge गोटे मु ट्रिक कहूची जेतेबेले दीटा बॉडी इमती कंटीन्यूअसली लागी के थिबे सेतेबेले दिस बॉडी गिव्स ए रिएक्शन टू दिस बॉडी सिमिलरली ए बॉडी टा भी कोन हबो ए बॉडी को दबो रिएक्शन सेतेबेले रिएक्शन टा इक्वल हे जाय रिएक्शन टा इक्वल एठी जेबी देखो जो R2 रिएक्शन वेज दला ब्लॉक भी सेही R2 रिएक्शन दबो काहा को वेज को दबो तो एठी हम सेमति कोन करिवो रिएक्शन सेमति पडिवो वेज विल गिव दैट R2 reaction to wedge now see what will happening here P force is there R2 reaction is there and R3 resultant reaction there एठी Rn आउ F टा को हमें कोन करछु रिजॉल्व करिकि गोटे रिजल्टेंट रिएक्शन को नै आछू सो एबे इन टोटल this wedge is experiencing horizontal manual force reaction from the block towards this direction this is R2 जो R2 टा wedge दोथला ब्लॉक को से R2 पुनी कोन दबो ब्लॉक दबो का wedge को this is R2 and resultant reaction R3 तो P R2 R3 को नेकी हमें एबे कोन करिवो गोटे पुनी ए बेले गोटे FBD बनेबो now see the wedge is experiencing horizontal manual force reaction from the block and resultant reaction from the ground see we'll do the FBD free body diagram
like we have discussed about the block. See, R3 is making alpha degree to the vertical. This is R3. ये जो R3 टाकू by applying principle of transmissibility of a force मु R3 को नेकी 8 थोई देबी. This is possible. कहीं ना हमें मेकानिक्स रे पढ़ी छु principle of transmissibility of a force. ये जो अल्फा टा एबे हमें कोठी जो एठी जो ओके मु एठी लेबे देबी केते मैं केमिति फोर्स को हम शिफ्ट करि परछु गोटे पॉइंट रो आउट पॉइंट को. नाउ सी एठी जो R2 एंगल करथुला थीटा प्लस अल्फा ए फिगर को हमें देखिबो बे R2 इज मेकिंग थीटा प्लस अल्फा डिग्री टू द वर्टिकल. ताकू तले हम तोड़ को प्रोसीड करिवो दैट विल बिकम सी दिस विल बिकम थीटा प्लस अल्फा. एठी भी मु देखै छी थीटा एंड अल्फा ए दिटा मिसी के हमर कोन हितला थीटा प्लस अल्फा हितला मु देखैतली प्रीवियसली. ओके आउ गोटे रहला हॉरिजॉन्टल फोर्स P. दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स P मु एठी एमति रिप्रेजेंट करिवि ताकू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स से प्रिंसिपल उपके की मु एटा गोटे आनी एठी थोइ देबी. दिस इज P एठी थोइ साला पर एठी आ रहिबोनी तब लेबे देबी. Now see, this is the FBD, free body diagram relating to the wedge. ए दीटा प्रिंसिपल के हमें पके कि हमें कोन देखो एठी तीनटा फोर्स तीनटा this is for block and this is for wedge. Now see here three concurrent forces, coplanar forces acting at a point. तमने में we can easily put the formula of Lami's theorem. कारण Lami's theorem रो condition कहूची three concurrent coplanar forces if in equilibrium then we can apply Lami's theorem. So एठी भी Lami's theorem हम apply करि परिबो. Here also R3 P and R2 is there. Three concurrent coplanar forces अछि तो एठी भी हमें Lami's theorem अप्लाई करू तो हमें टोटल फिगर रे हमें Lami's theorem अप्लाई करी कि जो वेज प्रॉब्लम टा को इजीली कर परिबो. वन मोर मेथड इज देयर एनालिटिकल मेथड और मेथड ऑफ रिजोल्यूशन. टिके कॉम्प्लिकेटेड होबो लेंथी होबो कैलकुलेशन टा टिके प्रॉब्लमेटिक होबो किंतु एटा होची शॉर्टकट मेथड अनलेस एंड अंटिल वी आर वेरी क्लियर अबाउट द फोर्सेस एंड रिएक्शंस फॉर बोथ द केसेस फॉर द ब्लॉक एंड द वेज. ब्लॉक आ वेज रु केमिति हमें बाहर कुलु एटा हम जानि गेलु एबे हम प्रॉब्लम सॉल्व करी. ओके लेट मी रब दिस. See, weight of the block is given 1500 Newton. Weight of the angle of the wedge is given 10 degree and coefficient of friction for all the surface. Coefficient of friction mu is given 0.3 implies that tan alpha is equal to 0.3 implies that alpha equal to tan inverse 0.3 that will come around say 16.7 degree something. Okay, let me see the value. Okay, the value of alpha is coming out to be 16.7 degree. तो एबे हमरो थीटा अल्फा वेट नोन एबे एमे पकेबू कोन केमति प्रॉब्लम टा हमें सॉल्व करिवू. Okay, let us see. See here, consider about the block. Considering block. Now see, block पाई मु FBD बनेइथिली W vertically downward that is 1500 Newton. R2
this is R2 and the angle is here theta plus alpha, that means 10 degree plus 16.7 degree, that is 26.7 degree. And R1 is having alpha degree to the horizontal, that alpha is here 16.7 degree. Now see what will happen here. Applying Lami's theorem. Applying Lami's theorem. See 1500 Newton divided by sine of this angle. Sine of 90 plus 26.7 degree is equal to R1 by this angle. R1 by sine of 180 minus 26.7 degree, which is also equal to R2 by this angle, sine of this angle, sine of 90 minus 16.7 degree. After calculation, we know this portion is known to us. Taking this amount to be a constant, R1 and R2 can be easily found out. Now see, our final objective is to find out P. Kete manual effort ame horizontal debu seta mor darkar. So this P is related to R2 and R3. A relation ru amar R2 ही बाहर कर देले ए रिलेशन में P पाइ जबो तले हमर R1 टा जानिबा दरकार भी नहीं. We can easily skip R1. एठी हमर दरकार नहीं. R1 दरकार नहीं. सॉल्व करले भी बेटर, किंतु सॉल्व करियाटा हमर वेस्टेज ऑफ टाइम होबो. कने हमर फाइनली कोन दरकार? P दरकार. हमें ए रिलेशन रो पाइ जबो 1500 बाय sin of 90 plus 26.7 is equal to R2 by sin of 90 minus 16.7. So after calculation, R2 will be 1977 Newton. 1977 न्यूटन. तो एठी R2 जो वैल्यू टा पाई गलु एठी भी हम इजीली पकई देबु 1977 न्यूटन. ये जो R2 वैल्यू टा को इजीली हमें ए फिगर में पुट कर देबु. नाउ सी, कंसीडरिंग कम टू वेज अगेन. कंसीडरिंग वेज, तो वेज रे हमें फ्री बॉडी डायग्राम टा बनेबु. This is P. This is R3. This angle is alpha, that is 16.7 degree. This angle is R2 and this angle is theta plus alpha, that means 26.7 degree. Now see, R2 रो वैल्यू हमको जाना अछि 1977. एठी हमें पुनी इक्विलिब्रियम लामिस थ्योरम पुट कर देबु. अप्लाई लामिस थ्योरम फॉर वेज. वेज पई अगेन हमें लामिस थ्योरम पुनी पुट करिवु. कहिथिली जेतोले तीनटा फोर्स पड़िथिबो कोलिनियर कनकरेंट हेथिबो सेतोले हमें पुनी हमें अगेन लामिस थ्योरम पकेइबु. दिस P will be, now see, P divided by sine of this angle. P divided by sine of 180 minus 16.7 plus 26.7 is equal to R2 by this angle,
sine of 90 plus 16.7. Now see, our term रहिला R3 by this angle में नहीं पारिबू लामिस थर्म अप्लाई करिकी किंतु हमर R3 दरकार नहीं हमर फाइनली कोन दरकार P दरकार जो P टा के हम R2 टर्म ही पाइ जिवु तो सेटा मु से रिलेशन टा लिखु नाही सो हियर आफ्टर सॉल्यूशन सी R2 हम वैल्यू पुट कर देबा R2 is equal to 1977 हम पुट कर साला परे इजीली calculating this equation P will be our 1136 Newton. So this is the answer. Now see, तो इतने बड़ा प्रॉब्लम टा, ये प्रॉब्लम टा परीक्षा रे आसिले 10 मार्क्स की 10 मार्क्स रे एबव आसीबो किंतु देखो इतने इजी ट्रिक खाली हमकु दीटा ब्लॉक आ वेज रो तीन टा फोर्स को रिकॉग्नाइज करिवर अछि को फोर्स और रिएक्शन केते डिग्री एंगल बनउछि सेटा को हम जानि गेला परे इजीली हम जो प्रीवियसली हम खाली दीटा लामिस थरम पुट करलु गोटे रे बाहला R2 आउट रे बाहला P सला ओवर वेरी इजी खाली ट्रिक टा को अप्लाई करिवर अछि सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम दिस इज द ऑल अबाउट concept of wedge and the friction by which the block is being raised upward by applying a very little amount of manual effort. So to conclude this class, I expect you to go deeply to this class to understand the facts and the problem which I have discussed here and refer the class notes which are provided in our MKD. Now see, this problem is over. From this discussion in this class, what we conclude is this problem is not a very busy, is not a very hard problem. Only you have to know the forces and reactions for both the block and wedge. A block and wedge रे को force पडुची केमिति पडुची कते डिग्री एंगल पडुची जहां हम बाहर करली if you could find if you जब तुम एटा को पाई जीवो इजीली की जानि जीवो तानी ए बडे प्रॉब्लम बहुत इजी 10 मार्क्स रो अधिक क्वेश्चन आसे 10 मार्क्स आसे के 12 मार्क्स आसे बट very easy unless and until you recognize the angles and forces and reactions ताकू लामिस थ्योरम रे पुट कर देले कोन हे जीवो हमर प्रॉब्लम ता इजीली हे जीवो मु एक्सपेक्ट करबी तमे माने समझते हमर एमकेडी वेबसाइट को जाके रेफर करो क्लास नोट्स रेफर करो डिफरेंट वेरियस काइंड्स ऑफ problems are there तब solve करा है जी वीडियो क्लास अच्छी रेफर करो डीपली जाओ you will easily understand all the facts and figures and you will solve all this type of problems numericals easily. So for this class again I welcome you to our MKD Education, a digital portal from which you can get every kind of your diploma education and I wish you refer and tell your friends to see our video classes and to join us. Thank you.